Hello everybody, you are welcome on my YouTube channel. Dear students, today I am here with the question answer of the lesson The 100 Dresses Part First. तो 100 Dresses Part First हाई स्कूल के लिए एक लेसन है और इसका क्वेश्चन आंसर मैं आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ. तो वीडियोस को वॉच कीजिएगा और इन क्वेश्चन आंसर को लर्न कीजिएगा. वेयर इन द क्लासरूम डज वांडा सिट एंड वाई. कक्षा में वांडा कहाँ पर बैठती थी और क्यों बैठती थी. जैसे मैंने तुमको बताया वांडा के बारे में हमने इसका सारांश पढ़ा. तो वांडा वॉज अ गर्ल देयर. शी वॉज वेरी पुअर एंड लिव्स इन बोगिंग हाइट्स. शी यूज्ड टू सिट इन द बैक बेंचेज. नाउ द क्वेश्चन इज वाई शी यूज्ड टू सिट देयर. कि वो वहाँ बैठा क्यों करती थी. तो इसका आंसर है वांडा यूज्ड टू सिट in the seat next to the last seat in the last row in room 13. She sat there because her feet were normally caked with dry mud and very dirty. So, in order to avoid being laughed at by her classmates, she sat there to hide her dirty feet. तो आंसर है कि वांडा वहाँ इसलिए बैठा करती थी क्योंकि वो बोगिंग हाइट्स में रहती थी. वहाँ से चल के आती थी. जनरली उसके पैर जो होते थे वो धूल से भरे हुए होते थे. तो ये सब से बचने के लिए कि बच्चे उसके पैरों को देखकर उस पर हंसे ना, इसलिए वो लास्ट बेंच में बैठा करती थी. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वेयर डज वांडा लिव. व्हाट काइंड ऑफ प्लेस डू यू थिंक इट इज़. वांडा कहाँ रहती थी और तुम उस स्थान को किस तरह का स्थान समझते हो. तो आंसर है वांडा लिव्ड एट बोगिन्स हाइट्स. इट सीम्स दैट इट वॉज अ प्लेस फार अवे फ्रॉम द स्कूल एंड ऑल्सो वेयर देयर वॉज अ लॉट ऑफ ड्राई मड, thereby indicating that it was not a very rich locality. तो वांडा बोगिंग हाइट्स में रहती थी और ऐसा समझा जाता है कि वो स्थान बहुत दूर था स्कूल से और वहाँ बहुत ज़्यादा मड था यानी मिट्टी धूल थी और ऐसा समझा जाता कि वो स्थान बहुत अच्छा नहीं था. आंसर व्हेन एंड व्हाई डू पैगी एंड मैरी नोटिस वांडाज अब्सेंस. कब और कैसे वांडा और उसकी वांडा की अब्सेंस को, अनुपस्थिति को पैगी और उसकी दोस्त मैडी ने महसूस किया, अनुभव किया. पैगी एंड मैडी नोटिस्ड वांडाज अब्सेंस आफ्टर 3 days. एग्जाम्पल ग्रेशिया ऑन वेंसडे बिकॉज दे वॉन्टेड टू बी विथ हर फॉर अ लॉट ऑफ फन. They waited for her for a long time, but she did not turn up. Next question. What do you think to have fun with her means? To have fun with means आप क्या समझते हो, यानी to have fun with her का मतलब क्या है. तो आंसर है Wanda was quiet and shy girl who was ashamed of dust-laden feet. The girls used to make fun of her. This gave them a lot of pleasure, therefore they wanted to have fun with her. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन वट वे वॉज वांडा डिफरेंट फ्रॉम द अदर चिल्ड्रन. किस तरह वांडा अन्य बच्चों से अलग थी. वांडा वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन. शी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स. शी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन. शी ऑलवेज or a faded blue dress that did not fit her properly. Unlike other children, she did not talk to anybody. Next question. Did Wanda have 100 dresses? Why do you think she said she did? तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्या वांडा के पास वास्तव में 100 ड्रेसेस थी और अगर नहीं थी तो वो ऐसा क्यों कहा करती थी. आंसर है नो. शी डिड नॉट हैव 100 ड्रेसेस बिकॉज शी वॉज पुअर एंड ओर द सेम फेडेड ड्रेस टू स्कूल एवरी डे. शी हैड एन inferiority complex. In order to hide the complex and impress the other girls, she always said that she had 100 dresses. Next, why is Maddie embarrassed by the question Peggy asked Wanda?
इज सी ऑल्सो लाइक वंडा और इज सी डिफरेंट। तो मैडी एम्बरेस क्यों होती थी? एम्बरेस मीन्स होता है शर्मिंदा होना। मैडी क्यों शर्मिंदा हो जाती थी, लज्जित हो जाती थी बाय द क्वेश्चन, प्रश्न से, पैगी आस्क वंडा, जो पैगी वांडा से पूछा करती थी। इज सी ऑल्सो लाइक वंडा, क्या वो भी वांडा की तरह पुअर थी, और सी डिफरेंट, या फिर वो अलग थी। तो आंसर है मैडी वॉज embarrassed by the question. Peggy asked Wanda because she was poor herself. She usually wore old clothes which were handed down by someone else. She did not feel sorry for Wanda. She was worried that perhaps later everyone would start teasing her too. She thought she was different from Wanda in the sense that she would never claim that she had 100 dresses. She was not as poor as Wanda, yet she was afraid that the other might mock her too. Next question. Why did not Maddie ask Peggy to stop teasing Wanda? What was she afraid of? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। कहता है कि वाई डिड नॉट मैडी आस्क टू पैगी, मैडी पैगी को क्यों नहीं कहती थी स्टॉप टीजिंग वंडा, कि वांडा को चिढ़ाना बंद करे। वट वॉज सी आफ्रेड ऑफ, उसे किस बात का डर लगता था। तो मैडी कुड नॉट आस्क पैगी टू स्टॉप टीजिंग वांडा बिकॉज पैगी वॉज हर बेस्ट फ्रेंड एंड सी हैड फेथ इन पैगी दैट सी वुड नेवर डू एनीथिंग रॉन्ग। सी वॉज अफ्रेड ऑफ बीइंग लाफ्ड एट फॉर हर पुअर ड्रेसेस। तो वो इस बात के लिए उसको मना नहीं कर पाती थी क्योंकि उसकी बहुत बेस्ट फ्रेंड थी और वो नहीं चाहती थी, नहीं सोचती थी कि वो कभी भी कुछ भी गलत करे। और इसके अतिरिक्त उसको इस बात का डर भी लगा रहता था कि जब मैं ये कहूँ कि वांडा को तुम परेशान मत करो, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरे से ही प्रश्न करना शुरू कर दे मेरी ड्रेस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिड मैडी थिंक वुड विन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, वाई? मैडी थॉट दैट पैगी वुड विन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट बिकॉज पैगी ड्रू better than anyone else. She could copy a picture in a magazine or some film star's face so well that one could tell who it was. Next question, who won the drawing contest? What had the winner drawn? Wanda won the drawing contest. The winner of the drawing contest was appreciated by the judges and applauded by her fellow classmate. Next question है, how is Wanda seen as different by the other girl? How do they treat her? Answer is, Wanda is seen as different by other girls. She is poor and lonely girl. The girl made fun of her poverty and teased her by commenting on her dress. Next question है, how does Wanda feel about dresses game? Why does she say that she has 100 dresses? Answer is, Wanda did not show any feelings regarding the dresses game. It is most likely that she was deeply hurt. It could have been one of the reasons why her family left the place and moved to the city. She was a girl who was very poor and came from a long distance, which made her feet dirty. She wanted to draw attention of her friends, so she felt very happy whenever she told her friend that she had 100 dresses without realizing that they were making fun of her. Next question, why does Maddie stand by and not do anything? How she is different from Peggy?
Was Peggy's friendship important to Maddie? Why? Which line in the text tell you? Maddie always stood by and never did anything, as she was afraid that if she did, she would be the next target of children. She herself was poor and therefore left that if she spoke against the others, they would target her next. Unlike her, Peggy was a rich girl. This was also the reason why Maddie could think from Wanda's point of view, but Peggy could not. Maddie was Peggy's best friend. It seemed as if she was in way of Peggy. She admired her quite a lot, as she said that Peggy was the most liked girl in the room and that she drew better than anyone else. She did not have the courage to go against her. Some of the lines from the text which show that Peggy's friendship was important to Maddie are as follows. Number first, Peggy, who had thought up this game, and Maddie, her inspirable friend, were always the last to leave. Second, she was Peggy's best friend and Peggy was the best liked girl in the whole room. Third, Peggy could not possibly do anything that was really wrong, she thought. Fifth, oh, Maddie was sure Peggy would win. Next question. What does Miss Mason think of Wanda's drawing? What do the children think of them? How do you know? Miss Mason answer is Miss Mason appreciated the paintings of Wanda. She was impressed at the creativity of the girl because she had painted 100 paintings which were in wide range of variety. The children also admired the drawings. Everybody stopped and whistled or murmured admiringly. After Miss Mason had announced that Wanda was the winner, they burst into applause, and even the boys were glad to have a chance to stamp on the floor and whistle. Also, just as Peggy and Maddie entered the room, they stopped short and gasped. Later, they recognized the designs as those which Wanda had described to them. And in the end, Peggy exclaimed, "And I thought I could draw." This shows that she also realized how good Wanda's drawing were. नाउ इस क्वेश्चन को आप सेल्फ कीजिएगा और इससे भी ये सारे क्वेश्चन आपने यहाँ बुक से देख करके खुद ही कर लेने हैं एक्सरसाइज से. सो ये आपकी एक्सरसाइज पूरी हो जाती है. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.